Very good evening to all of you. Welcome to Unacademy OPSC. My name is Samrat Mishra and we have started discussion on Indian polity and constitution yesterday. So in last two sessions I discussed about constitution, constitutionalism, evolution of the constitution, historical background in the formation of the Indian constitution. Good evening, very good evening to all those who have joined, Purushottam, Pratima and all others. OCS exam केबे हबो प्रतिमा पचारुछ OCS exam notification आसेनी, so you will get the notification, don't worry about it. Continue your preparation. So जदि yesterday session नु कार किछि doubt अछि, then you may raise your question, I will definitely answer to it. Before that, these are the ongoing courses in Unacademy platform. In Unacademy Plus, you will get 30 plus hours of live session every day, structured courses in English and Oriya language. There will be weekly quiz, weekly test series, live test, live quiz, mock test series for all the exam. You will get foundation course as well as revision batches. All the exams are covered under a single roof. Odisha Civil Service Exam, ASO, Assistant Section Officer Examination for High Court, for Secretariat, City Exam, B.Ed exam, CPSC, OMC. For each and every exam you can prepare with Unacademy. This is the list of our educators, those who will guide you throughout the preparation. Dikshant batch वर्तमान ये कंटिन्यू होची RIO अमीना एग्जाम पाई. मंथन बैच कोर्स ये B.Ed एग्जाम पाई आर्ट्स एज वेल एज फॉर साइंस स्ट्रीम. आत्मोदीप बैच ये सिटी एग्जाम पाई. Then मंथन बैच कोर्स साइंस exam पाई. comprehensive course for OSSC we have उड़ान बैच, सामर्थ्य बैच ASO secretariat exam पाई, सशस्त्र बैच ओडिशा पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम पाई, प्रगति बैच हाई कोर्ट ASO एग्जाम पाई, आधार बैच कोर्स ये फाउंडेशन बैच कोर्स फॉर OCS एग्जामिनेशन ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम पाई थ्रू NCERT. So these are the batch courses which are continuing right now in Unacademy. You may subscribe to any of the batch course which is given here by using the referral code SAMRATLIFE to get 10% discount. Very good evening Lalit Harichandan. Purushottam पचारुछ SI exam केबे हबो, notification तो आसीची, so it will take 2 to 3 months at least to prepare भी हो से time period भीतर exam तो हबो definitely notification आसीची, माने don't waste time, preparation जल्दी जल्दी स्टार्ट करो. सो आज गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर आम डिस्कस करबा, फंडामेंटल राइट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ राइट. राइट कौन प्रथम बुझिले आम फंडामेंटल राइट टॉपिक को आगे बुझी परिबा. वेरी गुड इवनिंग मोनालिसा. So rights are legal, social or ethical principle of freedom. In the very first class I discussed about it कि जदि हम state रो function देखिबा, state रो first function होची it is a police state. Then its function is like welfare state. Police state रे state कौन करूथिला, police state रे state कौन करूथिला ना, state रो function थिला protection provide करिवा. काहा को protection दबो ना, protection was provided to the citizen and protection was provided to the citizens and to the geographical territory. ये दुईटा जिनस को state protection provide करथिला. Then हमें देखिले state रो function change होची धीरे धीरे to welfare state where the primary responsibility of the state is
सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेट एठी डेवलपमेंट रा काम करूची सो citizen माने जेहेतु they are residing in a state, they are residing inside the state, they should be given with freedom. एमानक पाखरे freedom रहबा दरकार. For example, let's say there is a scientist. जदि ये साइंटिस्ट को फ्रीडम न मिले, जदि यहाँ पर कॉन्स्टेंट बा रिस्ट्रेंट लागे डिफरेंट टाइप रो, देन द पर्सन कैन नॉट डिस्कवर, ये डिस्कवरी करि परिबनी बा ये किछि नुवा जिंस बाहर करि परिबनी. दैट इज व्हाई फ्रीडम इज रिक्वायर्ड फॉर अ साइंटिस्ट. In the same way, for other professions, freedom is required, and the freedom should be given by whom? That should be given by the state. It is state function. So याको फ्रीडम आमे केमती प्रोवाइड करि परिबा बा फ्रीडम केमती गोटे लोकर फ्रीडम को आमे प्रोटेक्ट करि परिबा बाय एन्श्योरिंग सर्टेन राइट्स. देखो तो राइट्स आसे, राइट्स सहित सबले गोटे ऑब्लिगेशन आसी जाय. फॉर एग्जांपल आमे किछि राइट्स हम घर लोकन को दबा को चाहिए, आमे घर ही एग्जांपल हिसाब रे घर हिसाब रे स्टार्ट करबा कि लेट्स से राती 9टा परे केही बाहर को जिवेनी घर, आमे गोटे नियम कले घरे ना माने जो राइट्स एटी क्रिएट हला, एटी तो ये कंडीशन आमे क्रिएट करछे कि राती 9टा पर जने बाहर को जाई परिबनी, साइमल्टेनियसली अन्य मान को ऊपर ऑब्लिगेशन लागि गला. ऑब्लिगेशन कोन ना जो माने ये रूल को मानिबे, दे कैन नॉट गो अवे फ्रॉम द होम आफ्टर 9 pm. एमान राती 9टा पर घर बाहर परिबे नाही. If a person goes out, then the person has to face the consequence, maybe in terms of punishment. जदि हम स्टेट देखिबा, स्टेट प्रेस्क्राइब्स पनिशमेंट. को टाइप रो पनिशमेंट ना दीटा टाइप रो पनिशमेंट अछि. गोटेला इन टर्म्स ऑफ फाइन आ गोटेला इन टर्म्स ऑफ बॉडी. बॉडी इन टर्म्स ऑफ बॉडी मींस द पर्सन विल बी पनिश्ड. इन टर्म्स ऑफ बॉडी मींस ताको पुलिस अरेस्ट करके जेल रखियो बा जुडिशियल ट्रायल पर, जुडिशियल प्रोसीडिंग पर द पर्सन विल बी बिहाइंड द बार, से जेल रे रहयो. सो राइट्स कहला में बेसिकली एठु कोन बुझिले, राइट्स आर बेसिकली द लीगल, सोशल और एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम. फ्रीडम काहे कि नेसेसरी मैं ऑलरेडी डिस्कस कली. फ्रीडम इज वेरी इंपोर्टेंट. विदाउट फ्रीडम स्टेट कैनॉट डेवलप, गोटे स्टेट डेवलप हो परियो नहीं. सो दैट इज व्हाई वी नीड फ्रीडम. राइट्स आर ऑलवेज द फंडामेंटल रूल्स अबाउट व्हाट इज अलाउड ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू द लीगल सिस्टम, व्हाट पीपल शुड डू एंड व्हाट पीपल शुड नॉट डू. ये विषय डिस्कशन कोठी छि ना राइट्स रे. देखा जो राइट्स ऊपर हम डिस्कस करछे, दिस राइट्स आर ऑलवेज क्वालिफाइड, नॉट एब्सोल्यूट. एटी दीटा टर्म बुझिबा को पड़िबो. गोटे हला एब्सोल्यूट, गोटे हला एब्सोल्यूट आ गोटे हला क्वालिफाइड. सो ये दीटार मीनिंग कोन? लेट्स से मु कहली कि प्रत्येक दिन राती 9टा रे हम एटी YouTube रे सेशन रखिबा. Unacademy OPSC चैनल रे विल हैव अ YouTube सेशन एट 9 pm every day. If my sentence will be absolute, that means every day at 9 pm I have to take a session, irrespective of the problems that I am facing. For example, कोदिन पावर कट है, कोदिन इंटरनेट फैसिलिटी नहीं, सो ये सब कौन प्रकार एक्सेप्शन सुना जीवनी. I have to take session every day at 9 pm if my sentence is absolute one. जदि मु गोटे क्वालिफाइड सेंटेंस कहिछि, देन क्वालिफाइड सेंटेंस रा मीनिंग होछि कि with respect to certain condition at 9 pm I will take the class if electricity is available, if internet facility is available. जदि available नहीं, then I will not take the class. तो ये absolute और qualified. Then what are you thinking about rights? Rights को सबले absolute करिवाटा ठीक ना qualified करिवाटा ठीक? Absolute माने rights को जहाँ दिया जायछि that will be fixed. ये rights को हमें change करि परिबानी. And qualified करिवार meaning होछि rights certain condition अनुसारे से right को हमें impose करि परिबा बा exercise करि परिबा. For example, let's talk about freedom of speech and expression. Freedom of speech and expression. By using this article, under article 19, it has been mentioned about freedom of speech and expression. Let's say freedom of speech and expression को use करी जने आउ जन को गाली देबा को स्टार्ट करो. A person will start scolding another person. A person will start scolding another person. Now you will ask the person कि why are you scolding? The person will answer कि I am using my freedom of speech and expression which has been given to me under article 19 of the Indian Constitution. So ये जगह in this case the right is arbitrary or the right is misused. ये right को misuse करा जाउछि आ गोटे लोकर dignity को hamper करिया पय. That is why the rights should always be qualified and they cannot be absolute. However, Indian Constitution discusses about two absolute rights. One is article 20 and another one is article 21. या पर मु डिस्कस करिवि आगो. Then clear what is rights? Then natural rights. Natural right कहा को कहा जाय? The rights that we will get from the nature. ये मैन मेड बा आर्टिफिशियल राइट है नथिबा दरकार, ताको हम नेचुरल राइट कहे. फॉर एग्जांपल लाइफ, वी हैव अ लाइफ. सो लाइफ इज गिवन टू अस बाय द नेचर. इट इज नॉट मैन मेड. ह्यूमन बीइंग्स हैव नॉट गिवन अस द लाइफ.
That is why right to life is a natural right. Then legal right. Mona Lisa is asking, is it compulsory to all, sir? What? Kota pocharucho compulsory Mona Lisa? Kota compulsory pocharucho. So legal right kono? Legal right are completely based on the society's custom. It is based on the laws. It is based on the statute or action. ये अनुसार जो राइट को हमें इम्पोज करते हैं जो राइट को हमें यूज करते हैं हमें लीगल राइट बोली कहा जाए. फॉर एग्जांपल राइट टू वोट. नाउ जदि हमें फंडामेंटल राइट रो हिस्ट्री देखिबा इंडिया रे फर्स्ट टाइम पाई 1925 रे इंडियन नेशनल कांग्रेस फाइनलाइज द ड्राफ्ट ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल एंड अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स. Then 1927 Madras session. In Madras session it was incorporated to have fundamental rights in the future constitutional framework. Then historical background of the fundamental rights is next देखिए 1931 Karachi session. In that Karachi session of Indian National Congress a detailed program for fundamental right has been adopted. 1931 ପରେ ଆସିଲା 1935 Government of India Act and the act was completely silent about fundamental rights. That is why Government of India Act 1935 it clearly disappointed the Indian political leadership of that time. Then 1935 ପରେ 1945 रे गोटे कमिटी क्रिएट हला जहार ना थिला साप्रू कमिटी. बेसिकली ये फोकस कला गोटे रिटन कोड ऑफ फंडामेंटल राइट ऊपर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मुलेशन हबो जहार काम रहइबो ह्यूमन राइट्स को बा किछि फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन ने इंक्लूड करबा. फाइनली जेतबे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा गला इंडिया रे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेशन करा गला ड्राफ्ट करा गला एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी आर इंस्पायर्ड बाय यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूएसए रे जोटा फंडामेंटल राइट हम जहां को इंडिया रे कहउचे इन यूएसए दैट इज नोन एज बिल ऑफ राइट्स ताको हमें बिल ऑफ राइट्स कहउचे. सो बिल ऑफ राइट्स थ्रू इंस्पायर हे हमें फंडामेंटल राइट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो पार्ट 3 रे ऐड कले इन आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35. मोनालिसा कहउचे कि राइट्स आर कंपल्सरी टू ऑल. यस राइट्स आर कंपल्सरी टू ऑल. ये सिटीजन मान को इंडियन सिटीजन मान को ही पारे बा फॉरेनर मान को ही पारे दोज हु आर रिजाइडिंग इन इंडिया. Now let's discuss about the difference between ordinary rights and fundamental rights. Ordinary rights that is enacted in an ordinary law of the land and they are protected and enforced by ordinary law. Fundamental rights it is protected by the constitution. Fundamental rights को change करिया पे हेले we have to have a constitutional amendment. Constitutional amendment article 368 अनुसार करा जाए. Article 368 of the Indian Constitution discusses about two things. The first is procedure for amendment of the Indian Constitution and the second one is authority. The authority to amend the Indian Constitution has been given to the Parliament. So only Parliament can amend the Constitution. No other authority in India can amend the Indian Constitution. So जदि हमें Indian Constitution में originally देखिबा there are 7 fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to property and right to constitutional remedies. Right to property was there in article 31 but through 44th Constitutional Amendment Act 1978 the right to property it was deleted from the list. So right now there are only 6 fundamental rights and right to property is a legal right under article 300A of the Indian Constitution. Now let's discuss about different features of the fundamental rights. See fundamental rights Bartman I am going back to Mona Lisa's question. Mona Lisa last pachalla ki rights whether it is available to all or not or whether it is compulsory to all or not. See in India there are two type of people residing. The first is the people of India, they are the citizens of India and the second one is the foreigners. Foreign jo mane asiki India rohuchanti. Now the question is whether fundamental right is available only to the Indian citizens or it is available to the foreign citizens. तो जदि हमें देखिबा किछि फंडामेंटल राइट अछंती दे आर अवेलेबल ओनली टू द इंडियन सिटीजन्स. के यू हैव टू रिमेंबर दिस 5 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 20 and 30. These 5 fundamental rights are available only to the Indian citizens whereas other fundamental rights they are available to both Indian citizens as well as to foreigners. ठीक अछि और वो से लेट हला नो प्रॉब्लम. फंडामेंटल राइट रो आज फंडामेंटल राइट हम स्टार्ट करछे एंड फ्यूचर ऑफ फंडामेंटल राइट को वर्तमान स्टार्ट करछि. कंटिन्यू कर बुझी परिबा आगो. देन सेकंड गोटे जीवा हमें पॉलिटी बहुत इजी और बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक गोटे पर गोटे टॉपिक को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं के जीवा. इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट्स. ठीक अछि. द नेक्स्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट द सेकंड वन इज द स्टेट कैन इंपोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स.
It means the fundamental rights are never absolute, they are qualified. Already कही सारी, if the fundamental rights will be absolute, then there will be a problem. For example, let's say कि right to equality, we will make right to equality an absolute fundamental right. जदि हमें right to equality को absolute कर दबा ताहले problem कौन हम? All will be equal. Right to equality कहूची all are equal in the eyes of the law, irrespective of the religion, irrespective of the gender, irrespective of the caste, irrespective of the place of birth. That means all are equal in the eyes of the law. Then can we provide reservation to the women? जदि समस्ते समान ताहले हमें women मान को reservation provide करि परिबानी. We cannot provide reservation to SC, we cannot provide reservation to EWS, economically weaker section, we cannot provide reservation to the scheduled tribes. So reservation bond है. That is a right to equality. It is not absolute, rather it is qualified in certain circumstances. I would example दोची केमती fundamental right माने absolute नुहंती but qualified. Example मैं already देई सारची about freedom of speech and expression. आमे कहबा आर्टिकल 19 को यूज करी जण जण को गाली देबा को स्टार्ट करिवो. That violates article 21 of the another person. आउ गोटे लोकर आर्टिकल 21 को ये वायलेट करछि, राइट टू लाइफ एंड राइट टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ. काहे ना जण थोड़ा आउ जण को गाली दउछि, जे गाली सुनुछि से लोकर डिग्निफाइड लाइफ नष्ट होछि. So that is why fundamental rights are not absolute, they are qualified, that is subject to certain condition, that is subject to certain criteria. If those criteria will be fulfilled, conditions will be fulfilled, then fundamental rights will be given to others. Now next important feature देखो जदि हम इमरजेंसी देखिबा इंडिया रे इमरजेंसी तीनटा टाइम रे डिक्लेयर करा जाय परियो. फर्स्ट वार रे, सेकेंड एक्सटर्नल एग्रेशन, फॉर एग्जांपल चाइनीज आर्मी इंडिया रो टेरिटोरी को मारी आसुची ताको एक्सटर्नल एग्रेशन कहछि, एंड थर्ड वन इज आर्म्ड रिबेलियन. ये तीनटा ग्राउंड रे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करा जाय पारे. एंड आउट ऑफ दिस थ्री इन द फर्स्ट टू वार रे हो बा एक्सटर्नल एग्रेशन रे हो, ए दीटा रे जदि हम देखिबा देन आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड. एठी आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, whereas other articles they are not suspended. Other articles suspend होते नहीं, but article 19 only ए दीटा ग्राउंड रे ही सस्पेंड हुए, but not on the case of armed rebellion. Armed rebellion ने ये सस्पेंड हुए नहीं. Then most of the fundamental rights are against the arbitrary action of the state. Arbitrary action of the state माने कौन? Arbitrary action of the state माने कौन? मोनालिसा पचारछो सर व्हाट इज आर्म्ड रिबेलियन. देखो आर्म्ड रिबेलियन अर्थ होची फॉर एग्जांपल मु तो इंटरनल सिक्योरिटी डिस्कस करथुली सेठी पढाइथली आर्म्ड रिबेलियन. फॉर एग्जांपल मु कहबी माओवादी मानकर कथा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट केबीके डिस्ट्रिक्ट रे. मु कहबी मिलिटेंट आउटफिट्स इन जम्मू एंड कश्मीर. मु कहबी इंसर्जेंट आउटफिट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. ये सब को आर्म्ड रिबेलियन कहंती. व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल दे विल पिक अप आर्म, दे विल स्टार्ट गोइंग अगेंस्ट द स्टेट, से माने गवर्नमेंट अगेंस्ट रे जिवे एंड दे विल ट्राई टू ओवरथ्रो अ इलेक्टेड गवर्नमेंट, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. वर्तमान थिबा सरकार को एमाने ओवरथ्रो करबा को चेष्टा करबे एंड दे विल ट्राई टू पुट अ न्यू गवर्नमेंट. से माने गोटे नुवा गवर्नमेंट तांको हिसाब रे क्रिएट करबा को चाहेबे, ताको हम आर्म्ड रिबेलियन बोली को. सो बेसिकली आर्म्ड रिबेलियन इंडिया रे जदि हम देखिबा इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बा जाको माओवादी बोली कहा जाउची. जम्मू कश्मीर रे देखा देउथवा मिलिटेंट आउटफिट जो माने गोटे नुवा कंट्री चाहुचंती, बा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रे देखा जाउथवा इंसर्जेंसी को बुझाए. क्लियर बुझी पाला मोनालिसा? नेक्स्ट, fundamental rights are against the arbitrary action of the state. Basically arbitrary action of the state कहले हम एठी कोन बुझंती ना, the state cannot do anything whatever it wants. state ऊपर किछि restriction अछि and beyond those restriction the state cannot go. से state से restriction बाहर को जाई परिबो नै. फॉर एग्जांपल मु एग्जांपल फर्स्ट क्लास रे देथिली कि लेट्स से कोविड-19 एक्ट. कोविड-19 एक्ट अनुसार हमें देखले जे मास्क पिंधुनी ताको 500 टका फाइन देबा को पड़िबो, ताको 500 टका फाइन देबा पड़िबो. गवर्नमेंट एठी कोन करिवो कि कहबो कोविड-19 अनुसार जे मास्क पिंधिनी ताको हमें फांसी दे देबा, कैपिटल पनिशमेंट दे देबा. सो मास्क न पिंधिबा एवं कैपिटल पनिशमेंट दबा ये दिटार प्रोपोर्शन किछि नाही. से करिथिबा क्राइम अनुसार ताको दिया जथो पनिशमेंटटा प्रोपोर्शन नाही बा ठीक रेशियो रे नाही. 500 टका फाइन बा 1000 टका फाइन दैट इज परफेक्ट, एई पर्यंत ठीक अछि. जदि जो माने मास्क न पिंधिबे स्टेट से मानको जदि फांसी दे दिए देन वी कैन से दैट इज आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट. आर्बिट्ररी एक्शन अर्थ होची किछि इलॉजिकल एक्शन बा रीजनिंग नथिबा एक्शन जोठी स्टेट सिटीजन मानकर फ्रीडम को कंप्लीटली नष्ट कर दिए, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिए, ताको हम कहंती आर्बिट्ररी एक्शन. द नेक्स्ट, प्रियदर्शिनी पचारतो सर ऑनलाइन टेस्ट कर हाले कैसे हमें पता चलेगा कि टेस्ट होने वाला है? वेयर
ऑनलाइन टेस्ट कब कर रहे हैं और कैसे हमें पता चलेगा कि टेस्ट होने वाला है. You can download the Unacademy app. In the Unacademy app, you will get all the notification related to the test. Unacademy app को डाउनलोड कर दियो, से प्रत्येक इनफॉरमेशन पाई परिबो. Then fundamental rights. Some of the fundamental rights they are negative in character. What is the meaning of negative in character? Negative in character ର meaning होची जदि fundamental right को हम तो पढ़िबा वर्तमान देखिबो, it starts like the state shall not do like this. The state shall not do like that. That means ये नेगेटिव कैरेक्टर देखौची एंड इट पुट्स लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट. ता माने स्टेट ए जिंस करि परिबो नाही. नेक्स्ट, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी. देखो ये तीनटा सेट ऑफ राइट हमको मिलुची. द फर्स्ट इज आर्टिकल 19, द सेकंड इज आर्टिकल 20 एंड 21 and third set of right are other rights. Article 19 हमें देखले national emergency जेतेबेले हुए को ground रे ना on the basis of war and on the basis of external aggression it is automatically suspended. Article 20 and 21 they can never be suspended, यार suspension हेई परिबो नाही. Other article they can be suspended but with a separate proclamation by the president. जदि president गोटे separate proclamation करूछंती ताहाले other article suspend हेई परिबे. तो ये तीनटा जिनस मन रखिबो, या पर बारंबार क्वेश्चन आसे. फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. एटी ये कहूची हु इज द गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट. द आंसर इज सुप्रीम कोर्ट. सो एग्राइड पर्सन कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट. फॉर एग्जांपल मोटे गोटे एग्जांपल देखौची बुझो. फॉर एग्जांपल गोटे लोक दीटा लोकन भितरे मारपिट हेछि. Keep growing as asking sir what is national emergency. National emergency it is a separate topic of discussion. एको मु डिस्कस करिवि. 352, 360, 356 आर्टिकल ये सब डिस्कस करिवि. सो यू हैव टू वेट फॉर द सिलेबस. से पर्यंत आमे कंटिन्यू करिया पर्यंत अपेक्षा करिया पड़िबो. जेतले आसीबो नेशनल इमरजेंसी मु कंप्लीटली डील करिवि गोटे क्लास रे तापर. ठीक अछि. फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. एको हम एग्जांपल थ्रू बुझिबा. लेट्स से देयर आर टू पर्सन जो माने दी जनकर बाडिया बाडी हेचंती, मारपिट करचंती. सो माने कोन कले ना कोर्ट जाई केस कले. तो ये केस कोडी करिवे. बेसिकली एमाने सबले लोअर कोर्ट रे केस करंती. लोअर कोर्ट रो वर्डिक्ट अगेंस्ट रे दे कैन अप्रोच हाई कोर्ट. हाई कोर्ट रो वर्डिक्ट अगेंस्ट रे दे कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट. से माने सुप्रीम कोर्ट जाई परिबा हाई कोर्ट रो वर्डिक्ट अगेंस्ट रे. सो दिस इज द प्रोसेस. डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाई परिबानी बा डायरेक्टली हाई कोर्ट जाई परिबानी. जण जण को बाडैची तो मार खाइतवा लोक डायरेक्ट जाई हाई कोर्ट रे केस करि परिबानी बा सुप्रीम कोर्ट रे केस करि परिबानी. देयर इज अ प्रोसेस. ए प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ अपील बोली कहा जाय. लेट्स से गोटे लोकर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 वायोलेट हेछि. आर्टिकल 14 कहूची कि राइट टू इक्वालिटी. लेट्स से मु कहली कि जे पढियो को आछु मो पाखु ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर मु कहली गोटे मेल को मु पढेबिनी बा गोटे फीमेल को मु पढेबिनी. सो इन दिस केस आर्टिकल 14 ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज बीन वायोलेटेड. नाउ द पर्सन हैज टू मूव टू द कोर्ट. से लोक को कोर्ट जिवार अछि. से को कोर्ट जिवो? लोअर कोर्ट ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट. ये कहूची कि नेसेसरीली वे ऑफ अपील अनुसार से लोक को जिवार आवश्यकता नहीं. जेहेतु फंडामेंटल राइट वायोलेट हेछि डायरेक्टली द पर्सन कैन अप्रोच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. डायरेक्टली से हाई कोर्ट बा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करि परिबो जदि फंडामेंटल राइट वायोलेट हुए. डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जाई परिबो इवन इफ हाई कोर्ट को जिवार मध्ये कोनोसी आवश्यकता नाही. सो दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड द गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. ये बहुत टाइम रे क्वेश्चन आसीची पूर्वलु मन रखिबे. देन फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसैंट. सैक्रोसैंट रो अर्थ होची परमानेंट. दे आर नॉट परमानेंट and they can be curtailed or they can be repealed. I already देखले कि right to property it was deleted through 44th constitutional amendment act and पूर्वरु जदि हमें देखिबा right to equality जो आर्टिकल 14 देखुतले हमें बा आर्टिकल 15 देखुतले पढिबा तक वर्तमान एथरे हमें देखले धीरे धीरे रिजर्वेशन फॉर वुमेन इट वाज इंक्लूडेड. रिजर्वेशन फॉर एसटी, रिजर्वेशन फॉर एसटी, रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, इवन इफ रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस ये सब वर्तमान इंक्लूड हो सारी. बट कॉन्स्टिट्यूशन जो क्रिएट है तो नुआ कॉन्स्टिट्यूशन हमको आसला ये सब रिजर्वेशन नथिला. ताले ये रिजर्वेशन केमती मिलुची कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पड़े डिफरेंट टाइप ऑफ रिजर्वेशन मिलुची. सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट through a constitutional amendment act fundamental rights can be repealed or they can be curtailed. So that is why I am going to बुझले ना fundamental rights are not permanent. Fundamental rights are not permanent. बुझिएला. Why article 31 deleted sir?
फॉर एग्जांपल दीटा रीजन पे आर्टिकल 31 डिलीट होइछि राइट टू प्रॉपर्टी लेट्स से ए गोटे प्लेस अछि बी गोटे प्लेस अछि वेलफेयर स्टेट हिसाब रे गवर्नमेंट रो फंक्शन एटू एनएच करबा नेशनल हाईवे गवर्नमेंट को करबार अछि ये एनएच भितर ए जगह रे लेट्स से मोर प्रॉपर्टी अछि मु वर्तमान सरकार को ये जमी देबिनी एठी मो जमी देकी एनएच हवा पई ठीक अछि मु जमी को सरकार को मो लैंड देबिनी एठी एनएच करिया पई ता माने जणे लोक पई एते बड़ एनएच प्रोजेक्ट बंद हे जिवो सो एनएच हेले इकोनॉमी डेवलप हो जीडीपी बढ़िबो नेशनल इनकम बढ़िबो प्रोडक्शन बढ़िबो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बढ़िबो बट जदि जणे न दोछि तार जमी ताले गवर्नमेंट को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बाध्य होय कि बंद करिया पई पड़िबो दैट इज व्हाई राइट टू प्रॉपर्टी को एठू फंडामेंटल राइट रु हटै दिया गला याकू केवल गोटे लीगल राइट हिसाब रे आर्टिकल 300 ए रे रखा गला बुझि पारलो अनुप्रिया इज आस्किंग सर करंट अफेयर पई को आप रो पढिले भलो हबो करंट अफेयर ऑल द क्लासेस विल बी गेटिंग इन अनअकैडमी ऐप अनअकैडमी रे करंट अफेयर पे देयर आर मेनी एजुकेटर्स दोज हु आर गोइंग थ्रू इट बुझि पाला आर्टिकल 31 काहे रिपील हला ए होची प्रथम कारण द्वितीय कारण आर्टिकल 31 रिपील होबार कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस करिया पई किछि लोकन पाखरे बहुत अधिक जमी थिला थ्रू द जमींदारी प्रोसेस जमींदार मान को ऊपर समस्त सुनिथिबे सो जमींदारी प्रोसेस को हटेया पई जो इनइक्वालिटी क्रिएट हेतला किछि लोक मान को पाखरे अधिक जमी किछि लोक पाखरे कम जमी ताको कम करिया पई आर्टिकल 300 ए रे आर्टिकल 31 ए वाज रिपील्ड एंड इट इज नाउ इन आर्टिकल 300 ए देन Article 33 enables the Parliament to restrict the application of fundamental right to the members of armed forces. देखो जो माने आर्म्ड फोर्स पारामिलिटरी फोर्स पुलिस फोर्स बा इंटेलिजेंस एजेंसी रे काम करूछंती जदि हमें देखिबा आर्म्ड फोर्स पारामिलिटरी फोर्स पुलिस फोर्स एंड इंटेलिजेंस एजेंसी रे जो माने काम करूछंती एमानकर सर्विस कौन एमाने बेसिकली कौन चाहती दे ट्राई टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द कंट्री एमानकर ऑब्जेक्टिव होची सिक्योरिटी कंट्री को प्रोवाइड करबा लेट्स से आर्मी रो जने मेजर ये कौन करबे ना आर्टिकल 19 को यूज करी आर्मी रो जने मेजर आर्टिकल 19 को यूज करी कौन करबे ना इंडियन आर्मी रो लूप होल्स ऊपर डिस्कस करबे कि एटा होची इंडियन आर्मी रो नेगेटिव पॉइंट बा लूप होल्स Now it will be a positive factor for the Chinese army बा enemy मानक पई ये गोटे पॉजिटिव फैक्टर हिसाब रे काम करिवो सेति पई जो माने paramilitary force armed force बा इंटेलिजेंस सर्विस रे काम करूचंती they are not provided with fundamental rights exercising their fundamental right has been restricted through article 33 of the Indian constitution then some of the fundamental rights are directly enforceable and some of the fundamental right ताको enforce करिया पई we need certain laws किछि फंडामेंटल राइट डायरेक्टली एनफोर्सेबल देन आउ किछि फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करिया पई हमको किछि लॉ फॉर्मुलेशन करिया पड़े फॉर एग्जांपल आर्टिकल 35 रे जिंसो डिस्कस हेछि फॉर एग्जांपल हमें देखिबा कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट हमें देखिले कि अनटचेबिलिटी इट हैज बीन गिवन इन अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम सो Constitution ने मेंशन है कि Constitution prohibits untouchability in any form and the Parliament is required to legislate laws to enforce Article 17. Article 17 directly enforceable नुहे ये खाली कहूची कि untouchability is prohibited. So if a person practices untouchability, what is going to be the consequence? It has been mentioned in the Prevention of Atrocities Act. बुझेला सो किछि आर्टिकल अछंती किछि फंडामेंटल राइट अछंती जो माने ऑटोमेटिकली एनफोर्स होंती आउ किछि अछंती जहा पई हमको लॉ फॉर्मुलेशन करिया पई पड़े देन नीलकंठ सोमू नमस्कार ये गला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट नाउ विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल सो आर्टिकल 12 रे हमें कोन डिस्कस करबा ना आर्टिकल 12 डिस्कसेस अबाउट स्टेट और इट डिफाइंस स्टेट इट प्रत्येक जगह मु यूज करबी गोटे टर्म स्टेट सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट देखो हमें ऑलरेडी जानि छे कि गवर्नमेंट हैज 3 ब्रांचेस तीनटा ब्रांच अछि गवर्नमेंट पाखरे कोन ब्रांच अछि ना द फर्स्ट इज द लेजिस्लेचर जहार काम होछि लॉ फॉर्मुलेशन करबा एग्जीक्यूटिव ताको एनफोर्स करबो एंड जुडिशियरी एडजुडिकेशन प्रोवाइड करबो ये तीनटा जिंस हमें जानि छे ये तीनटा होछि गवर्नमेंट रो फंक्शन सो लेजिस्लेचर रा काम किए बा लेजिस्लेचर किए ना फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज द पार्लियामेंट स्टेट गवर्नमेंट पाई ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट गवर्नमेंट पाई देन एग्जीक्यूटिव किए सेंट्रल गवर्नमेंट पाई ये होची प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
स्टेट गवर्नमेंट पाई ये होची चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देन जुडिशियरी किए ना जुडिशियरी जदि हम देखिबा इन इंडिया वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशियरी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी माने जुडिशियल सिस्टम सेंटर आउ स्टेट पाई सेपरेट नुहे, जुडिशियल सिस्टम इंडिया रे इंटीग्रेटेड ता माने स्टेट पाई भी सेंटर पाई भी सेम जुडिशियल सिस्टम अछि हम पाखरे। सो पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हे गेले एक्जीक्यूटिव। ये कहूँ स्टेट अंडर को मैंने आसुची ना लेजिस्लेचर आसुची, एग्जीक्यूटिव कंप्लीटली आसुची। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर जुडिशियरी कम्स अंडर इट और नॉट। जुडिशियरी आर्टिकल 12 अनुसार स्टेट रो डेफिनेशन भितर आसुची ना आसु नाही। तो जदि हम देखिबा जुडिशियरी रो फंक्शन दी प्रकार फंक्शन अछि, गोटे हला जुडिशियरी रो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन आ गोटे हला जुडिशियल फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कोन आमे जानि जे कि जुडिशियरी इंटीग्रेटेड ऑलरेडी कहली मु एंड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट माने कोन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सहित आर किछि भी रिलेशनशिप नाही। किंतु इंडिया रे जेहेतु हम पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस करूछंती, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी सॉरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दे आर इंटरकनेक्टेड। जो माने एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होचंती फर्स्ट दे हैव टू बी द एमपी, तो अर्थात से माने प्रथमे लेजिस्लेचर को गले, से माने दे आर फर्स्ट द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, देन दे विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ता माने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव भीतर इंडिया रे बा पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिलेशनशिप थाए। किंतु जुडिशियरी इज कंप्लीटली डिफरेंट, यार एग्जीक्यूटिव एवं लेजिस्लेचर सहित कौन प्रकार रिलेशन न थाए। सो जुडिशियरी रो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट माने जुडिशियरी जहां रिक्रुटमेंट हुए ये सब रिक्रुटमेंट निजे जुडिशियरी ही करिथाए। ऑल द रिक्रुटमेंट्स आर डन बाय द जुडिशियरी। तेणु ये जो दीटा काम हम देखिले गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव काम को कहते एडमिनिस्ट्रेटिव साइड और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ जुडिशियरी, अनदर इज जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शन ने जुडिशियरी बा कोर्ट वर्डिक्ट दियंती, न्याय सुनांती। जेतेबेले जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड डिस्चार्ज करंती दैट कम्स अंडर द स्टेट, जेतेबेले जुडिशियल फंक्शन करंती देन दैट डजंट कम अंडर द स्टेट। बुझिला जुडिशियरी केतेबेले स्टेट अंडर आसे और केतेबेले आसे नहीं। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव दे कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट एज पर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन डिस्चार्ज कला बेले आसे, जुडिशियल फंक्शन डिस्चार्ज कला बेले आसे नहीं। क्लियर? स्टेट अंडर क्या आसुचे और क्या आसुनी। देन नेक्स्ट लेजिस्लेचर कथा में डिस्कस कले एंड गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ना सेंटर रे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट रे स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के ना रूरल रे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, शहर मानकरे म्युनिसिपालिटी, ये सब स्टेट रो डेफिनेशन भितर आसंती। या व्यतीत किछि स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक एलआईसी, ओएनजीसी, हाल, भेल एमाने मध्य स्टेट रो डेफिनेशन अंडर रे आसंती। मोनालिसा इज आस्किंग व्हाई जुडिशियरी इज डिफरेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ये कथा तो जुडिशियरी रे आउ अधिक डिस्कस करबा, तबे भी कहि दउछि जदि पतरछ। गवर्नमेंट रो तीनटा ब्रांच थाए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर भीतर रिलेशनशिप अछि इंडिया रे, बट जुडिशियरी सहित नाही। काहे कि मानि नियो गोटे किंग अछि, गोटे राजा अछि, जहा पाखरे हमें तीनटा जाक अथॉरिटी रखि दैछे। सी लॉ फॉर्मुलेट करिवो, सी लॉ को एग्जीक्यूट करिवो, प्लस सी दोषी को दोषी साब्यस्त करी पनिशमेंट प्रोवाइड करिवो। जदि समस्तଙ୍କ पाखरे पावर कॉन्सेंट्रेटेड हेकि रहे, याको सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोली कहा जाए। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर लीड्स टू करप्शन बिकॉज power corrupts and absolute power corrupts very absolutely. That is why when the three branches of the government they will be concentrated, but तीनटा जाक ब्रांच रो काम को जदि जनक ऊपर दिया जाए ताहले करप्शन बढ़ी बढ़ी चलिवो। जुडिशियरी को जदि हम सेपरेट न करूछे देन करप्शन लेवल को हम चेक करि परिबानी। करप्शन को कम करिया पई जुडिशियरी सेपरेट इन इंडिया। बुझियला? लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट आर्टिकल 361A डिस्कस करिबा हमें जेतो आसीबो से कांसेप्ट सब। So article 12 में बुझिले। Now we'll discuss about article 13. Article 13 को फैक्टर को डिस्कस करछि देखिबा। Article 13 फर्स्ट डिस्कस करछि बा डिक्लेयर करछि व्हाट इज अ लॉ। देन ये कहछि कि इफ अ लॉ इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, जदि गोटे लॉ फंडामेंटल राइट रो अगेंस्ट रो जाए ताहाले कोन हो। ठीक अछि, डेमो लिखु जी। गोटे मिनट। आर्टिकल 13 आर्टिकल 13 ने हमें फर्स्ट देखिबा व्हाट इज अ लॉ, देन विल डिस्कस इफ अ लॉ इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, if a law is against fundamental right then what will happen,
देन विल डिस्कस अबाउट 3 doctrines, 3टा डॉक्ट्रिन ऊपर एठी डिस्कस होईची। द फर्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, doctrine of basic structure. The second one is doctrine of severability. Third one is doctrine of eclipse. Doctrine of eclipse ये 3टा जिनस को डिस्कस करबा। एतिक जिनस बुझिले हम आर्टिकल 13 को कंप्लीटली बुझी परिबा कि आर्टिकल 13 को फैक्टर ऊपर डिस्कस करूछि। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फर्स्ट बुझबा कि व्हाट इज लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार लॉ का कहा जाए। देखो लॉ रो जदि हम सोर्स देखिबा देन देयर आर 2 सोर्सेस। कोन कोन? द फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव सोर्स। लेजिस्लेटिव सोर्स किए ना जोटा पार्लियामेंट फॉर्मुलेट करछि सेंट्रल गवर्नमेंट पई बा जोटा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्मुलेट करछि। एंड अनदर सोर्स इज द नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स किए ना बेसिकली द कस्टम बा आम सोसाइटी रे जो ट्रेडिशन आमे मानुचे से ट्रेडिशन। ये कहूँ लॉ भितर लेजिस्लेटिव सोर्स आसुची नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स आसुची इंडिया रे। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड ये कहूँ आउ के इंक्लूड होची लॉ रो डेफिनेशन भितर। ये कहूँ ऑल द परमानेंट लॉज एंड ऑल द टेम्पररी लॉज। ऑल परमानेंट एंड ऑल टेम्पररी लॉज। परमानेंट लॉ कौन और टेम्पररी लॉ कौन? जदि आम लॉ फॉर्मुलेशन प्रोसेस देखिबा इंडिया रे, फर्स्ट बुझ लॉ फॉर्मुलेशन प्रोसेस कौन, केमती लॉ फॉर्मुलेट हुए इंडिया रे। First, there will be a proposed draft of the law. The draft is known as bill. आपको हमें bill को। The bill will be initiated either in Lok Sabha or in Rajya Sabha. लोक सभा रो पास होला पर ये जीवो राज्य सभा को बा राज्य सभा रो पास होला पर जीवो लोक सभा को। दीटा हाउस रो पास होला पर it will go to the president. It will go to the president. जते बेले president एको assent देवे, president assent देला पर it will become a law. ये वर्तमान law है जो। तो यही वे रे bill becomes a law. Let's say there is a time when the parliament is not in session. Parliament is not in session. Parliament is in session नहीं, but there is urgent requirement of the law. There is urgent requirement of the law. ताले ये जगह रे कौन करा जो? In this case, the president can formulate the laws. ये प्रोसेस को हमें completely bypass करी परिबा। ये प्रोसेस को बाईपास करी प्रेसिडेंट लॉ फॉर्मुलेशन करेंगे जहाँ को कहा जाए ऑर्डिनेंस। कौन कहा जाए को आपको कहा जाए ऑर्डिनेंस। बर्तमान ये ऑर्डिनेंस को प्रेसिडेंट केवल फॉर्मुलेट करि परिबेनी। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल लॉ पाई प्रेसिडेंट करि परिबे, स्टेट लॉ पाई गवर्नर फॉर्मुलेट करि परिबे। सो आर्टिकल 13 कहूची, आर्टिकल 13 कहूची कि जते परमानेंट लॉ अछि, परमानेंट लॉ माने तो लॉज व्हिच आर फॉर्मुलेटेड बाय Parliament, laws which are formulated by state legislative assembly, they are permanent, and all the temporary laws. Temporary law किए ना, temporary laws are basically the ordinance. Ordinance which are formulated either by the president or formulated by the governor of the state. ये आसुची law रो definition under article 13 of the Indian Constitution. देन या व्यतीत आउ गोटे प्रोसेस अच्छी लॉ फॉर्मुलेशन जहाँ को कहा जाए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। कौन कहली? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कौन आउ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को किए करे? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कौन आउ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को किए करे? देखो आम ऑलरेडी देखले कि पार्लियामेंट रो फंक्शन होची लॉ फॉर्मुलेट करबा। लेट्स से किछि गोटे लॉ आसुची जे गोटे टेक्निकल लॉ, फॉर एग्जांपल इसरो ऊपर लॉ आसुची बा स्पेस साइंस ऊपर लॉ आसुची। इन दिस केस व्हाट हैपेंस, जो माने पार्लियामेंटेरियन माने रहिले बा एमपी माने रहिले, दे हैव लेस नॉलेज अबाउट द टेक्निकलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। दैट इज व्हाई दे विल फॉर्म अ ब्रॉड फ्रेमवर्क। एमाने गोटे फ्रेमवर्क बनै देबे। ये फ्रेमवर्क बनै की को माने को देबे ना याकू सिविल सर्वेंट बा सीनियर ब्यूरोक्रेट आईएएस ऑफिसर माने को दे देबे। सो आईएएस ऑफिसर माने से ब्रॉड फ्रेमवर्क भीतर रही की लॉ फॉर्मुलेशन करेंगे। दोस लॉज आर नोन एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। लॉ फॉर्मुलेशन होतुवा को लेजिस्लेशन कहा जाए। डेलीगेटेड बोली काहे की कहा जाए ना, एठी लेजिस्लेचर बेसिकली तार काम को डेलीगेट कर दिया आउ जन को बा आईएएस ऑफिसर माने को बा एग्जीक्यूटिव माने को। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सो आर्टिकल 13 कहूची कि परमानेंट लॉज इंक्लूडेड, टेम्पररी लॉज इंक्लूडेड, डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस आर इंक्लूडेड। आउ कौन आर्टिकल 13 कहूची, आउ कौन कौन इंक्लूड हेबे आ भितरे
ना फॉर एग्जांपल किछि बायलॉज आसुछि किछि रूल अछि बा किछि रेगुलेशन अछि बा किछि नोटिफिकेशन अछि नोटिफिकेशन माने फॉर एग्जांपल आमे ओपीएससी रो नोटिफिकेशन देखुछो यूपीएससी रो नोटिफिकेशन देखुछो सो ऑल दीज आर लॉज अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सबु आर्टिकल 13 अंडर रे लॉ रो डेफिनेशन अंडर रे आछुछंती सो बुझे गेला व्हाट इज द लॉ फर्स्ट व्हाट इज केशवानंद भारती केस सर अपेक्षा कर मु कॉन्टेक्स्ट आसले कहबी जहां पढौची सेउथरु जदी डाउट आछी को केशवानंद भारती केस कहबी रमेश थापर केस कहबी एडीएम जबलपुर केस कहबी सब केस कहबी डोंट वरी अबाउट इट बट इट विल टेक टाइम जो कॉन्टेक्स्ट जहां कहबा कथा कहबी प्रथम बुझेला लॉ रो डेफिनेशन कोन इंडिया रे लॉ रो डेफिनेशन अंडर आर्टिकल 13 समस्त बुझिला देन विल मूव फॉरवर्ड आपर हम नेक्स्ट कांसेप्ट डिस्कस करबा लेट्स से a law is against fundamental right a law is against fundamental right then what will happen जदि कोनोसी परिस्थिति रे गोटे लॉ फंडामेंटल राइट रो अगेंस्ट रे जाए देन व्हाट विल हैपन सिंपल जिंस द लॉ विल बी चैलेंज्ड इन कोर्ट which court it can be challenged in supreme court as well as in high court then high court will examine the validity of the law of the law if the law is against fundamental right if it is against fundamental right the law will be declared as invalid or it will be declared as void or it will be declared as ultra virus जो प्रोसेस रे सुप्रीम कोर्ट बा हाई कोर्ट ये लॉ को वैलिडिटी को चेक करिवे द प्रोसेस इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू कोन कोन देखो आको कोन जुडिशियल रिव्यू के करि परिवे सुप्रीम कोर्ट आउ हाई कोर्ट आको करि परिवे वर्तमान देखो क्वेश्चन होची जुडिशियल रिव्यू रे कोन देखा जाय हमें ऑलरेडी देखले कि पार्लियामेंट रो फंक्शन होची लॉ फॉर्मुलेशन करबा पार्लियामेंट रो काम होची टू फॉर्मुलेट लॉज ये लॉ फॉर्मुलेट करिवो जदि पार्लियामेंट एठी आर्बिट्रेरीनेस रखे माने मन इच्छा लॉ फॉर्मुलेट करे देन इट विल गो फॉर जुडिशियल रिव्यू एंड इट विल बी डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड ये जिंस हमें देखले नाउ द क्वेश्चन इज पार्लियामेंट इज द ओनली अथॉरिटी टू फॉर्मुलेट लॉज आउ तो कई फॉर्मुलेट करि परिबेनी इंडिया रे जुडिशियरी बा एग्जीक्यूटिव लॉ फॉर्मुलेट करि परिबेनी ओनली पार्लियामेंट कैन फॉर्मुलेट लॉज पार्लियामेंट व्यतीत आउ कई करि परिबेनी वर्तमान क्वेश्चन होची पार्लियामेंट को पर्यंत लॉ फॉर्मुलेट करि परियो बा और व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्मुलेट द लॉज को एक्सटेंट पर्यंत करि परियो तो एटा बुझिया पय हमको गोटे कांसेप्ट बुझिया पड़िबो जहा को कहा जाय द कांसेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट और द डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट डॉक्ट्रिन कहूची पार्लियामेंट हैज नो प्लीनरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन ता माने यार अर्थ होची पार्लियामेंट पाखरे अनलिमिटेड अथॉरिटी नाही लॉ फॉर्मुलेट करिया पई रादर पार्लियामेंट रो ये अथॉरिटी होची कंप्लीटली लिमिटेड को एक्सटेंट पर्यंत लिमिटेड बा को पर्यंत लिमिटेड ना नॉट डिस्ट्रॉइंग टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोन कहली नॉट डिस्ट्रॉइंग टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ द क्वेश्चन इज बेसिक स्ट्रक्चर ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने को जगह लिखा जायछि ना इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज बीन मेंशन्ड नो हियर ये कोनोसी जगह रे मेंशन करा जाय नाही ताली ये कोड आसिला ना दिस इज अ जुडिशियल इनोवेशन माने कोन जुडिशियल इनोवेशन माने होची ये जुडिशियरी रो गोटे वर्डिक्ट अनुसार आसीची गोटे केस रो वर्डिक्ट अनुसार आसीची को केस रो वर्डिक्ट अनुसार आसीची जुडिशियल रिव्यू ना इट केम फ्रॉम द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ये केस रु आसीची एठी सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देचंत ताल सुप्रीम कोर्ट एठी कोन वर्डिक्ट देले सुप्रीम कोर्ट रो वर्डिक्ट एठी कोन आसीची देखिबा ना सुप्रीम कोर्ट कहले कि बेसिक स्ट्रक्चर रो अर्थ होची पार्लियामेंट लॉ फॉर्मुलेट करि पारिबो बट नॉट अप टू द एक्सटेंट ऑफ नॉट डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर कोन ना बेसिक स्ट्रक्चर को कहले कि ये होची किछि प्रिंसिपल ये होची किछि आइडियोलॉजी दीज आर सर्टेन आइडियोलॉजीज beyond which the constitution cannot stand or basically they are the basics of the Indian constitution
दे आर द बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो एठी जेमति पीरियडिक टेबल देखुछ, पीरियडिक टेबल कोन अछि ना, इट इज अनफिल्ड. फ्यूचर रे जदि किछि नुवा एलिमेंट आसे, फ्यूचर रे नुवा एलिमेंट आसिले ता पई स्पेस अछि पीरियडिक टेबल रे. इन द सेम वे बेसिक स्ट्रक्चर रो लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट कलेनी, ताकू इनकम्प्लीट करके छाड़ देले. सो द लिस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज इनकम्प्लीट. कौन कौन आसुची बेसिक स्ट्रक्चर लिस्ट भितर? फर्स्ट आसुची रिपब्लिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. इंडिया गोटे रिपब्लिक कंट्री. देन इंडिया गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री. देन इंडिया रे डेमोक्रेटिक कंट्री व्यतीत द नेक्स्ट इज फ्री इलेक्शन, फ्री एंड फेयर नेचर ऑफ इलेक्शन. देन पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तामाने ये सब जिनस को पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा आर्टिकल 368 यूज करी चेंज करि परिबो नाही, बा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यार हेई परिबो नाही. ये सब जिनस फिक्स. रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, फ्री एंड फेयर नेचर ऑफ इलेक्शन, पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देन सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. या भीतर सेपरेशन ऑफ पावर, separation of power between the central government and the state government, between the central government and the state government. ये सब को constitutional amendment करी चेंज करा जाई परिबो नै, which are known as basic structure of the Indian constitution. बा आपको doctrine of basic structure बोली कहा जाए. बुझिला doctrine of basic structure कोन? क्लियर? doctrine of basic structure समझते? Then I will discuss about the second one, doctrine of severability. Doctrine of severability. Severability कौन? Let's say गवर्नमेंट गोटे लॉ फॉर्मुलेट करिछि. ए लॉ तो डायरेक्ट गोटे स्टेटमेंट न था, एथरे बहुत गोटे क्लॉज थाए. तमे देखिले ये हला फर्स्ट क्लॉज, एथरे ए बी सी डी ई एफ एमती 6टा क्लॉज अछि. तो ये 6टा क्लॉज भितरु वंस अगेन कोटा बुझ पलन को बेसिक स्ट्रक्चर अर्थ होची द गवर्नमेंट कैन नॉट फॉर्मुलेट लॉज, द गवर्नमेंट कैन नॉट फॉर्मुलेट लॉज व्हिच वायोलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिक स्ट्रक्चर गोटे प्रिंसिपल बा गोटे आइडियोलॉजी जहाँ को हैम्पर कला भलिया लॉ पार्लियामेंट फॉर्मुलेट करि परिबो नाही. बुझिला? लेट्स से सिवियरेबिलिटी को आसीबा. लेट्स से गोटे लॉ अछि जोथरे बहुत गुडे पॉइंट अछि ए बी सी डी ई एफ. तो एथिरु हम देखिले क्लॉज सी. लेट्स से द लॉ वायोलेट्स आर्टिकल 14. ये आर्टिकल 14 को वायोलेट कला. सो दैट इज व्हाई या पई केस करा गला कोठी ना सुप्रीम कोर्ट रे. सुप्रीम कोर्ट तापर कोन कले, केस हला परे तो केस चलला, सुप्रीम कोर्ट आको विचार कले, देखिले ये टोटल लॉ ये 6टा जाका क्लॉज आर्टिकल 14 को वायोलेट करूनी, रादर ये क्लॉज रो ओनली सी पार्ट, क्लॉज 1 सी पार्ट इट वायोलेट्स द फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 14. ये 14 को वायोलेट करूची. देन व्हाट विल हैपन? एठी सुप्रीम कोर्ट ये टोटल लॉ को इनवैलिड बोली डिक्लेयर करिवे ना पार्शियली इनवैलिड बोली डिक्लेयर करिवे? कोन करा जवा उचित? सो यार आंसर होची जदी एक्सेप्ट क्लॉज सी, इफ एक्सेप्ट क्लॉज सी द एंटायर लॉ इज वैलिड, बा जदी ये लॉ रो मीनिंग थाए, और इफ दे कैन स्टैंड इंडिपेंडेंट, जदि से माने इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करि परंती, इफ दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, देन ओनली क्लॉज सी विल बी डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड. एठी केवल क्लॉज सी को इनवैलिड बोली डिक्लेयर करा जिवो. अदर क्लॉजेस दे विल बी वैलिड, अदर क्लॉज वैलिड हेबे. फॉर एग्जांपल आर्टिकल क्लॉज सी, ये आर्टिकल क्लॉज सी को बाद देला परे एंटायर लॉ इंडिपेंडेंटली स्टैंड करि पारु नाही. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द एंटायर लॉ विल बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड. ये टोटल लॉ एठी इनवैलिड हे जिवो. याको को आ जाए डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी. सो डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी ले बेसिकली सुप्रीम कोर्ट बा हाई कोर्ट कोन चेक करंती, गोटे लॉ रो जो पार्ट ऑफेंडिंग पार्ट, जो पार्ट केवल अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, केवल सही पार्ट को सिवियर कर देवा पई बा सेपरेट कर देवा पई चेष्टा करंती. ताको डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी बोली कहा जाए. देन द थर्ड वन, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ये कौन कहूची? आम पाखु 1949 रे आसिला कॉन्स्टिट्यूशन, 26 ऑफ नवेम्बर 1949 रे आम पाखु आसिला कॉन्स्टिट्यूशन. या पूर्व तो इंडिया रे लॉ एग्जिस्ट करूथला, विभिन्न प्रकार लॉ थिला.
गोटे लॉ थिला बेरार मोटर एक्ट। बेरार मोटर एक्ट ये एक्ट अनुसार ओनली द स्टेट माने एटी बुझी सारी ऑलरेडी और द गवर्नमेंट कैन इंटरफियर इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बिजनेस। केवल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बिजनेस करि परिबो। प्राइवेट इंडिविजुअल जदि तुमे चाहिबो गाड़ी रखिया पई बा गाड़ी बिजनेस करिया पई करि परिबोनी, मु चाहिबो करिया पई मु करि परिबोनी। काहे कि ना बेरार मोटर एक्ट ताकू प्रोहिबिट करूथला। किंतु आमे परे देखिले हम पाको आसिला आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19 कहूची कि राइट टू प्रोफेस एनी ऑक्युपेशन। राइट टू प्रोफेस एनी ऑक्युपेशन मु वर्तमान एठी कहबी राइट टू प्रोफेस एनी ऑक्युपेशन अर्थ होची मु एनी टाइप ऑफ ऑक्युपेशन प्रैक्टिस करबी एंड एनी ऑक्युपेशन आल्सो इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बिजनेस। किंतु ये जगह आमे देखिबा बेरार मोटर एक्ट द्वारा मु ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बिजनेस करि परिबिनी। ये 1947 पूर्व एग्जिस्ट करथिला। 1949 पर आसला कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मते अलाउ करूची मोटर व्हीकल बिजनेस करिया पई। नाउ व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन? ये जगह सॉल्यूशन कोन हो तामाने डेफिनेटली बेरार मोटर एक्ट इट विल बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट जस्ट बिकॉज ऑफ इट वायोलेट्स आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ द कोर्ट विल डिक्लेयर इट इनवैलिड। जदि कोनोसी लॉ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट जाए हम ऑलरेडी पढ़ी सारचे कि इट विल बी डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड। याको इनवैलिड बा अल्ट्रा वायरस बोली डिक्लेयर करा जिवो। तो सुप्रीम कोर्ट एठी कहउचंती कि याको इनवैलिड बोली डिक्लेयर करिवार आवश्यकता नाही। काहे कि नाही ना जोटा में कॉन्स्टिट्यूशन देखुचे द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। दिस इज द ऑर्गेनिक लॉ। दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। दिस इज ऑर्गेनिक एंड द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। सो या पूर्वर जदि कोनोसी एक्ट बा कोनोसी लॉ एग्जिस्ट करूथिला and if that act goes against the constitution then the act से act को invalid बोली declare करिवार आवश्यकता नहीं। rather that will be eclipsed। eclipse कोन that will be overshadowed। जेमति देखुछ solar eclipse होची बा lunar eclipse होची it will be overshadowed by the constitution। काहे कि ना constitution होची सबटु बड़ लॉ। constitution under रे ये लॉ याटी eclipse लागे जो और द लॉ विल ऑटोमेटिकली बी इनवैलिड डॉर्मेंट। ये लॉ डॉर्मेंट होकर रही जो याको कहा जाए डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। बुझी हला ताले हम आर्टिकल 13 ने कोन पढिले एटी मु समरी दोची। आर्टिकल 13 ने कोन पढिले फर्स्ट हम पढिले व्हाट इज द लॉ। सेकंड हम एटी डिस्कस कले एटी हम देखले व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लॉ। तापर हम देखले इफ अ लॉ इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट जदि फंडामेंटल राइट रो अगेंस्ट हुए ताहले कोन हबो। थर्ड हम देखले डॉक्ट्रिन्स केतेटा डॉक्ट्रिन देखले। फर्स्ट देखले हम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर देन डॉक्ट्रिन ऑफ severability and doctrine of eclipse. So this is all about article 13. So today I discussed article 12, article 13 and features of the Indian features of the fundamental rights. जदि या भीतर काहा किछि डाउट अछि ताले को मते यदि एति के टॉपिक भीतर किछि डाउट अछि को। The next topic to be discussed is article 14 of the Indian Constitution. एथिरे मु इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ को डिस्कस करिवि एंड द सेम थिंग विल डिस्कस फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। आसंता काली हम को डिस्कस करबा सेम टाइम एट 9 pm 9टा बेला हम को डिस्कस करबा पुनी। So those who have not subscribed to Unacademy Plus, they may subscribe to it by using this referral code Samrat Live SAMRATLIV. If you are using it, then you will get 10% discount on your Plus subscription. बा किसी फ्री कंटेंट को अनलॉक करिया पई मध्य कोड दरकार हबो। यू मे यूज दिस कोड सम्राट लाइव फ्री कंटेंट को अनलॉक करि परिबे। डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप एंड यूज दिस रेफरल कोड। सो मु ऑलरेडी कहि सरची दीज आर द ऑनगोइंग बैचेस इन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। उड़ान आधार बैच ये एनसीईआरटी पई क्रिएट हेची फॉर एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच। प्रगति बैच हाईकोर्ट एसओ पई। सशस्त्र बैच फॉर ओडिशा पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम। सामर्थ्य बैच सेक्रेटेरिएट एएसओ पई। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर ओएसएससी एग्जाम उड़ान बैच। मंथन बैच बीएड एग्जाम पई साइंस एज वेल एज आर्ट्स पई। आत्मोदीप बैच सिटी एग्जाम पई। दीक्षांत बैच अपकमिंग आरआई एंड अमीन एग्जाम पई। This is the list of our educators, those who will guide you throughout your preparation. Subscribe to Unacademy Plus and avail their guidance.
Under a single subscription, you can prepare for Odisha Civil Service Examination by OS exam. You can prepare for Secretariat as well as High Court ASO exam. You can prepare for City, V8, CPSC and OMC exam. So Odisha government ro pratek exam pai apan prepare hi paribe under a single subscription. You will get all live classes, structured courses, lessons which are given by our top educators, weekly quiz, detailed analysis of syllabus, detailed analysis of progress, live test, live quiz, mock test series for all exam, foundation batch as well as revision batch. On a daily basis, you will get 30 plus hours of live session, structured courses in English and Odia language. So that's all for this session. I will see you in the next class at 9 PM tomorrow. Go through the book Lakshmikant book रे मैं जति की टॉपिक आज पढ़िले आपको पढ़. If you have any doubt ताले कालीर क्लास रे मते जणाइबो. I will definitely clarify it. So I am winding up this session. See you in the next class. Thank you everyone. Good night.